Welcome to CVR English. This is Jyoti. Let's get into the details. Sources reported that polling was actively underway at a booth set up in Kanya Madhya Vidyalaya, Aurangabad as part assembly elections facilitate a safe and orderly voting process. Observers noted that voters were arriving steadily and election staff were managing operations efficiently. The polling center was reportedly equipped with necessary arrangements to handle turnout and maintain transparency. Authorities emphasized that security personnel had been deployed to prevent any disruptions and uphold the integrity of the electoral exercise. The Election Commission was believed to be monitoring developments closely across all constituencies involved in this phase. Congress leader Nana Patole reportedly condemned the recent blast near Delhi's Red Fort, expressing solidarity with the victims and their families. He was said to have reaffirmed the party's stance against forces acting against national interest. Patole also criticized the BJP and the central government for allegedly politicizing the Pahalgam incident under the banner of Operation Sindoor. According to his remarks, such actions were described as shameful, especially when public safety in the national capital remained a concern. He reportedly questioned the government's accountability, referencing its leadership claims. His statement reflected both grief over the tragedy and the political disapproval of the ruling party's handling of security narratives. इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और जो निरपराध लोग उसमें मारे गए इस बम स्फोट में उनके परिवार को हम ये जो उनके ऊपर कष्ट और दुख आया है ये ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे ये सहन करने की। दूसरा प्रश्न है कि मैं 26/11 का मुंबई के हमले के बारे में बात करता हूँ। हम लोगों ने कभी भी देश के साथ जो भी खिलवाड़ करता है उसका विरोधी किया है कांग्रेस ने। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ये भूमिका स्पष्ट की थी जब पहलगाम में जो घटना हुई थी उस पर सब और हम सरकार के साथ है और पाकिस्तान को ये जवाब देने का मौका है। इसमें हम पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार के केंद्र सरकार के साथ हम आए। इस तरह की बात हमारे नेता राहुल गांधी ने की थी। लेकिन जब पहलगाम के घटना में जिस तरह से सरकार ने और बीजेपी ने राजनीति की ऑपरेशन सिंदूर के नाम से वो तो पूरा देश देख रहा है। आज उनको अब जवाब देने का समय है। ये जवाब अब केंद्र की मोदी की सरकार को बीजेपी को देना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कश्मीर में हमारे बॉर्डर में जब हमला होता है तो एक बात उसमें मान सकते कि वो आगे भाग गए, लेकिन दिल्ली में हमारे राजधानी जो सुरक्षित नहीं है इसका जवाब ये 56 इंची को देना पड़ेगा और इसमें हमको कोई राजनीति नहीं करना है। हमारा सवाल है कि आज देश असुरक्षित है और केंद्र की सरकार इसके लिए पहले तो इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और जो निरपराध लोग उसमें मारे गए इस बम स्फोट में
UP CM Yogi Adityanath was reported to have visited the Sheikh Peet Devi Patan temple in Tulsipur, where he offered prayers during his spiritual visit. Sources indicated that the Chief Minister's presence at the revered site drew attention from devotees and local officials alike. The visit was seen as part of his continued engagement with religious and cultural traditions across the state. Officials accompanying him reportedly ensured smooth arrangements at the temple premises. Observers noted that the Chief Minister's gesture reflected his deep-rooted spiritual beliefs and connection with the regional heritage. The event was described as peaceful and devotional, with the temple authorities welcoming the visit as a moment of significance for the local community. Following the blast near Red Fort, DCP North Raja Bantia reportedly stated that a case had been registered at Kotwali police station. He was said to have confirmed that the Unlawful Activities Prevention Act, the Explosive Act and the relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita had been invoked. According to his remarks, forensic experts, FSL teams and other specialized units were actively investigating the crime scene. Bantia reportedly emphasized that all evidence was being collected meticulously and that no conclusive statements could be made at this stage. He assured that verified information would be shared with the public once facts were firmly established. The investigation remains ongoing under tight security. उससे ज़्यादा अभी कुछ भी कंक्लूसिवली पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम में फॉरेंसिक साइंस की टीम भी है, एफएसएल की टीम है, उसके अलावा एनएसजी की भी टीम है और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की टीम है जो बहुत ही बारीकी से पूरी सीन ऑफ क्राइम का अभी जाँच चल रही है। और उसके अंदर जो भी लिफ्ट एविडेंसेस जरूरी हैं वो सारे लिफ्ट किए जा रहे हैं। सर, किस तरह के एक्सप्लोजिव का जो इस्तेमाल हुआ, कुछ और जानकारी अभी मैं एक सबके लिए बता देता हूँ। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज़ एफएसएल अभी जो है वो सीन ऑफ क्राइम को देख भी रही है और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। तो उससे ज़्यादा अभी कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं किया जा सकता। जब भी हमारे पास कुछ भी फैक्ट्स आएंगे जो एस्टेब्लिश होंगे तब उसकी जानकारी यथा समय पे दी जाएगी। गाड़ी के ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया गया है? अभी सब कुछ चल रहा है। अभी इट इज़ ऑल ऑन गोइंग। कौन सी एजेंसी इसमें पूरे मामले? पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम में फॉरेंसिक साइंस की टीम भी है, एफएसएल की टीम है, उसके अलावा एनएसजी की भी टीम है और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की टीम है जो बहुत ही बारीकी से पूरी सीन ऑफ क्राइम का अभी जाँच चल रही है। और उसके अंदर जो भी लिफ्ट एविडेंसेस जरूरी हैं वो सारे लिफ्ट किए जा रहे हैं। सर, किस तरह के एक्सप्लोजिव का जो इस्तेमाल हुआ, कुछ और जानकारी अभी मैं एक सबके लिए बता देता हूँ। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज़ एफएसएल अभी जो है वो सीन ऑफ क्राइम को देख भी रही है और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। तो उससे ज़्यादा अभी कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं किया जा सकता। जब भी हमारे पास कुछ भी फैक्ट्स आएंगे जो एस्टेब्लिश होंगे तब उसकी जानकारी यथा समय पे दी जाएगी। गाड़ी के ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया गया है? अभी Authorities reportedly tightened security at Secunderabad railway station in response to the recent high-intensity blast near Delhi's Red Fort metro station. The explosion, which claimed at least 9 lives and damaged several vehicles, prompted nationwide vigilance. Officials were said to have increased surveillance and deployed additional personnel at key transit points, including Secunderabad. To prevent any potential threats, sources indicated that passengers were being screened more thoroughly and patrols had been intensified across the premises. The move was described as a precautionary measure aimed at safeguarding public spaces in light of the tragic incident. Railway officials reportedly assured that all necessary steps were being taken to maintain safety and order for commuters.
During the second phase of the Bihar Assembly elections in Bodh Gaya, voters from diverse backgrounds were reported to have turned out in large numbers. Among them, specially abled voter Jitendra Kumar was said to have appealed to the public to vote actively for the progress and future of Bihar. He reportedly expressed gratitude to the government for providing accessible facilities for individuals like him and senior citizens. Kumar was believed to have cast his vote in favor of education and development, emphasizing the importance of civic responsibility. His statement reflected the inclusive spirit of the elections and the growing awareness among citizens about their role in shaping Bihar's future through democratic participation.